आदित्य रंजन जी। आदित्य रंजन जी 2015 बैच के आईएएस हैं। आपका कैडर झारखंड है। इस समय आप कोडरमा जिले के डीसी हैं और आप वैसे मूलतः पढ़ाई से आप इंजीनियर हैं और उसके बाद आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, आपने स्कूल चलाया, आपने हॉस्पिटल चलाया, आपने एनजीओ चलाया और भी कई सारे काम आपने किए हैं। आप 2014 में पहली बार IRS इनकम टैक्स में सिलेक्ट हुए। उसके बाद अगले साल आप 2015 में IAS बने और आपको उस साल 210 नंबर थे इंटरव्यू में और पहले साल आपको 196 नंबर इंटरव्यू में रहे, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। आदित्य जी आप करेक्ट कर दीजिएगा। 212 नंबर शायद इंटरव्यू में आपको 210 ही है। 210 रहे। और जो अनौपचारिक बात मैं कहना चाहता था कि आदित्य जी सबसे बढ़िया जो इनकी खूबी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं और कोविड के समय इन्होंने बहुत सारा क्रिएटिव काम किया है। अभी इस साल हमने मेंस लिखे हुए कई सारे लड़के जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, वो फील्ड का अनुभव लेना चाहते थे, तो हमने आदित्य जी से रिक्वेस्ट की। उन्होंने वहां पर एक सप्ताह का एक प्रोग्राम बनाया और वो मेंस लिखे हुए स्टूडेंट वहां जाकर फील्ड का अनुभव भी लेकर आए और वो बहुत ही प्रसन्न है। उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ये जो मुझे सबने फीडबैक किया है। और आदित्य जी की खूबी मैंने पहले ही बता दी थी कि इतना सटीक और प्रैक्टिकल आपको कोई नहीं बता पाएगा, आप कहीं भी चले जाए। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे सेशन आप सुनेंगे, वो इंफॉर्मेटिव होंगे, थोड़े बोरिंग भी होंगे, लेकिन आप इसको एंजॉय करेंगे। तो मैं आदित्य जी को आपके एंजॉयमेंट में ज्यादा मैं बाधा नहीं डालता। मैं आदित्य जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रारंभ करें और फिर आपका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप वो पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ से खत्म करके ही अपने मन के सारे डाउट जाएं। सॉरी ज्यादा समय लेने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजू जी और सभी संकल्प के सभी संकल्प परिवार के मेरे जानकार और सभी अन्य कार्यकर्ता। और शाम की बेला है, सभी स्टूडेंट्स का पढ़ने का पीक आवर होता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट आवर अब स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। बट मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स जो लोगों ने मेंस लिखा है, पहले तो मेंस लिखने के लिए ही बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों ने एक कड़ी मेहनत से ऑलरेडी एक मुकाम हासिल कर लिया है। और मतलब अभी भी मुझे चाहे वो 45-50 की उम्र के ही कोई लोग क्यों ना मिले, वो कुछ बाकी अपने बारे में बताएं ना बताएं, अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन ये जरूर मेंशन कर देते हैं कि मैंने 1975 में पहली बार मेंस लिखा था। तो सर्विस में होना नहीं होना वो अलग बात है, बट ये चीज है कि ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो आपको लाइफ लॉन्ग साथ रहेगी और आप अच्छा ही करेंगे। हाँ, लैंग्वेज का एक बार पूछ लें, क्या कंफर्ट, वैसे मिक्स लैंग्वेज में चलाएंगे तो ठीक है। इंग्लिश में कर लेते हैं दोनों, हिंदी इंग्लिश। आई थिंक मोस्ट पीपल विल बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट स्टिल आई विल ट्राई टू maintain a good balance. Obviously field mein after staying for 7-8 years, especially in Jharkhand, slowly we talk among ourselves ki after 10 years we won't be able to speak in English, but still I'll try to maintain a good balance. So मेरी तरफ से from my side huge congratulations to all of you, especially for writing mains in your attempts, and all the best है। अभी how to prepare for interviews, so before that I'll just introduce myself. Most of the introductions has been done from Raju Chauhan ji itself, but still I'll introduce myself so that there is no discrepancy, and you can at least have a good connect about ki what is your background and what is my background, and then you can draft your questions well when the question answer round actually happens. So I'm a BIT Mesra graduate in computer science. I worked for a couple of years in Bangalore in Oracle. And after working for a couple of years, in 2012, I wrote mains. That year, because of butchering of public administration, I could not qualify mains. Next year, I wrote got through Indian Revenue Service in 2014. In 2015, I got into IAS. I had 210 marks out of 275 that year.
I am born and brought up of Jharkhand, and I did my schooling from Bokaro, and I have stayed for 2.5 years in Delhi. Uh, Other than that, I come from a businessman family background, and most of my school time was spent in handling both the things. So I do not come from any service background. Other than that, on an introduction part, I had worked with couple of NGOs. I did help one of my friends in establishing a school on a cross subsidy model. I did establish a hospital on my own through cross subsidy. Now it is running as a private organization. After getting into service, I quit everything, and then I'm doing this exclusively for the time being. But obviously, you never know where things take you. Uh, Moving towards the preparation thing, for me, personality test has always been the most interesting part, and I think for you too. Since childhood days, we have been listening to these random, useless questions as well. That this was asked in UPSC interview, and only rank one could answer this, something like that. So the aura was already there. So I was very much interested to at least take one interview in my life from UPSC, but I had to take two, obviously. I would say it is very important in terms of gaining your marks, because if you have good marks in mains and if you have very good marks in personality test, you will get the service of your choice, cadre of your choice. And if you have average or low marks in mains, and again you have very good marks in personality test, you will at least be in the list or at least get one service. So for me, it was always a crucial juncture, I would say. Clearing prelims and mains itself is a huge task. So for me, it was always a huge thing to um, get good marks in interview so that I will get a choice of service or choice of cadre, or whatever my marks in mains is, I at least will be in the list. वो मेरे लिए बहुत ही important factor था. इसीलिए do not take it lightly. The most crucial part I would say is interview. Also because of the percentage of marks that you get in interviews. I'm not aware of last 3-4 years, but still the cutoff marks for mains comes down to 30%, 40%, something like that. Even the highest is 50%, 60%, mostly 50%. But in interviews, highest is close to 80%. So you can understand the gap of the vitality of personality test. Um Moving forward, why it is important, I have already told you. Moving forward, I would say there is no uniform lecture for the personality test. If there are 40 students listening to this lecture now, I assume 10 must have given 2 interviews, 10 must have given 1 interview, and 20 must have never faced in personality test. So I would say that there cannot be a uniform lecture. But obviously, being a wise student, being a student who has cleared prelims and who is through mains as well, I would say you would have to listen to all this shit and then pick your the cherries that suits you. Many of the points that will be useful for all rest 20 who has never taken any interview will not be useful for those who have already done it. But still, I'll have to speak it for the sake of the whole batch. So moving forward, first and foremost thing that I have got to know about personality test is there's a huge impact of halo effect. There's huge human factor involved in the personality test. And as everybody says, the probability or uh, luck factor, the probability or the luck factor involved in this exam increases at every levels. So prelims, there is luck factor, obviously what you have read and what has come, there is a luck factor there. Mains, there is a luck factor who checks your copies. And then there is luck factor in personality test, which is the most कि आज interviewer का mood कैसा है. You never know who is going to take your interview and what mood he is in. So there are students who have faced random things in the personality test. So there is always a human factor involved, and the luck factor obviously increases after the selection in the surveys, then cadre allocation, then service allocation. So essentially, luck is a huge thing. But
I have given other lectures also, internet per hai. My only focus in all the preparation modules has always been on deciding on what depends on luck and what doesn't, and then focusing on what doesn't depend on luck. So most of the time I would basically divide these two things कि ठीक है उसका मूड कैसा है, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं, पर ये सोच के कि उसका मूड खराब ही होगा, मैं अपनी प्रिपरेशन खराब ना करूं. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉर ऑल ऑफ यू, just count on those things which are controllable and then work on them. Do not count on uncontrollable things. That is always there, that will always be there. So you should always have a good record of your career. So whatever career you have pursued in your education part or the profession part, you should have a very good record of it in your head. And then moving forward, I would say let's start with the day of your personality test. About clothes, mostly lectures must have been done, whatever is comfortable to you. I'll just comment on one thing in the uniform part or the dress part, is you should wear the best possible thing. And the only reason I would say, I remember it was 24th of May of my personality test, and I was wearing a suit, boot, blazer and all, and tie, etc. And I till date I do the same. So when I went to the interview board, the first question that they asked is, it's 24th of May, it's such a warm afternoon, so do you think are you feeling cold or something? Then I said, no sir, uh, on the most important day of my life, I just wanted to look the best possible. And they all smiled. And in my batch of 8 candidates in one batch, out of all the 8, I was the only one who was wearing a blazer with a tie. So I would say ki in a herd of 8, 10, or in a herd of, think about the board who is taking these personality tests for last 1 month, they have been facing for so many kids. You need to create a distinction. So the best possible is the only way to distinguish yourself. You cannot have funny outfits to distinguish yourself from others. So whatever is the best, you wear that. If you have some traditional clothing style, that you can also prefer, but you should be confident enough to carry it. The other thing that I would like to discuss is the entry exit thing. You should have a good practice of entry and exit. We all had very good practice. Personally, I would say when I used to practice before the personality test, whenever I used to get inside the room, I used to make one of my friends to sit inside and then observe my walking style, observe my coming in style, and observe how effortlessly I can unbutton my blazer buttons while sitting on the chair. So such minute details of entry and exit, if you can practice, it is very good. Other than that, then there is certificates and photographs and all, which generally I don't know what is the uh, process these days, but those days we had to keep all our certificates, photographs with us. So my personal opinion is, whatever is asked for, please keep it with you. Not that without it you will not be allowed to take interviews, or we will not be allowed to face the board. Aisa kuch nahi hai. But still, keeping all those things on your fingertips in your file will make you confident, will not give you jitters. Like in a hall of 20, if everybody is having X and you have Y, out of 2019 is having X and you don't have that, you, even if it is not important, you will feel out of the place. तो जो भी मांगा गया है वो सब कुछ साथ ले जाना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. पोस्चर और एक्सप्रेशन को लेके मैं कई बार बात करता हूँ. तो योर पोस्चर एंड एक्सप्रेशन, okay, so there are questions. You can keep posting your questions on in the text. I will answer them in the last. So about the posture and expression, I would say you should have a very genuine posture, smiling face, and you should not change your expressions very much or in extravagance, depending on the answers you are able to give or you are not. If you are not able to give answers, doesn't mean that you will go down in the chair. If you are able to give answers, doesn't mean that you should grow up in the chair. You should stay calm. You may smile. You can give a serious face. If you are not able to answer, you can feel sorry for it with a gentle smile. You can give a broad smile when you are able to answer a good question.
So that is there, but you should not react extravagantly. The answers, about the answers, I would discuss in your question answer session. I have done many question answer sessions earlier also. Generally, my answers are always very crisp and have no tails attached. Mostly because I have had prepared them earlier. तो मुझे जो भी मार्क्स इंटरव्यू में आए हैं 200 के आसपास, तो उसमें मेरा यही हमेशा रहता था कि all the questions I would say 80% were already prepared. तो मुझे पता होता था कि वो क्या पूछने वाले हैं, what next question they will ask, and if I answer this, and what will be their next move. If they move in that direction, I am prepared. If they don't, then I'm prepared for the next as well. Next is whom to see and whom to not. Obviously, the person who is asking you the question, you should see him the most. But in between, you should see the chairman, because he is the one who is going to decide your fate. And personally, I am averse to putting any extra remarks on any questions or any gesture. Like at the end of interview saying it was really nice, sir. ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. They are doing it professionally. You should do it professionally too. Just answer what is expected. Do not put in extra remarks. If you are not very smart enough, there are people who impress the board with last remarks as well. वो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत practice वाला बंदा हूँ, और मैं believe करता हूँ 90% लोग वैसे ही होते हैं, और जो 10% वैसे नहीं होते extra smart वाले, तो उनको ये क्लास की शायद जरूरत ही नहीं. तो इसीलिए जो क्लास कर रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके मन में वो फियर है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंस्ड रह के आराम से निकल जाना ये अच्छा है देन पुटिंग योर थिंग इन ईदर on 200 plus or below 100. You should be in the balanced thing. One very important question that people ask in the class of interviews is, मेरे से तो बस fact पूछ रहा था, उससे बहुत opinion based पूछ रहा था. And there will be grudges like they never asked me what will I do in civil service if I become an IAS. I was so prepared for this. They never asked me opinion based questions. That is why my marks is less. अरे my board तो entered into the domain of expertise like electrical में घुस गया था, पूरा electrical पूछने लग गया था. तो ये हमेशा ही रहेगा. But through the observations of my batchmates and for last 5-6 years I have been guiding students in Samkalp as well and with other platforms as well. तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इतने सारे बच्चों के साथ है वो यही कहता है कि they are there to judge your opinions as only. They are there to judge your personality. But they sometimes, obviously the luck factor that I was telling you, that you know मेंस का कॉपी अगर किसी ऐसे ने चेक कर दिया, इसने आपको बहुत नंबर दे दिए जो आप डिजर्व नहीं करते, तो वो एक चेक है जो वो करना चाहते हैं. तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि if your DAF speaks very high of you in terms of your board percentage, in terms of your schooling, in terms of your college, in terms of your grades in college, in terms of the companies you have worked for, your past services, etc. If you have a very good track record, trust me, there is a huge chance that they will ask exclusively opinion-based questions. Because through your track record, you have proven that you are not failing them at facts. You are a sincere student. You have been sincere since childhood. You have very good grades and very good colleges on your DAF. So you must be a very good kid in terms of education. Now they are there to judge not on the basis of talent, but your opinions, your thought process, your balance of judgment, your views on society, your views on administration. So they will ask opinion-based questions. But I have seen people who have done engineering from any alpha beta college type of college, which people have not heard of, nothing harsh to these colleges. But my observation says that if the college is not famous enough or good enough, or your grades are not good enough, like not in the 90s, or you have not worked for very good companies which are reputed for keeping good talent, then they first ask you fact-based questions. And when you are able to answer them, they move forward towards opinion-based questions. When you're stuck there, they will keep asking you fact-based questions. तो मेरा ये है कि आप अपना डैफ के हिसाब से तय कर लीजिए कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपका डैफ तगड़ा है, तो आप सीधा ओपिनियन बेस्ड पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना कॉलेज ग्रेजुएशन पे फोकस कर सकते हैं. एंड इफ योर डैफ इज नॉट दैट स्ट्रांग, यू मस्ट go through and brush up your graduation subjects really well. They'll go very harsh on you. अगर उसमें कोई मैथ्स का बंदा मिल गया and you have maths honors, then they will crush you in the maths only. तो वो थोड़ा सा देख लेना. इसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन पर्सनालिटी बी बिल्ट.
तो ये देखो, पर्सनालिटी ऐसी चीज है ना, विच कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट, बट इट कैन बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यस, इट्स अ प्रोसेस, बट इट कैन बी फास्टेंड टू. तो मैं क्या करता था कि मुझे पता था कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज आई हैव नो big beard, I have not kept my hair properly, I was not taking bath maybe for a couple of days, so and wearing weird clothes, because the study is the main focus that we are doing that those days. तो अभी क्या है कि आफ्टर मेंस आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि नहीं, now I have to prepare myself for the personality test, where I don't have to show only my answer sheets, I have to show my face, I have to show my body. So from the mains on, from the next day of mains, I started to follow a particular routine for myself. Just to give you an idea of why I'm telling this to you is, all of us, I'll ask a small question, that none of us would be able to walk on the streets of Delhi wearing a pink trouser and a red shoe, right? Because we are not used to doing it. But there are Delhites, or there are people who are able to do it because they have been doing it for a long period of time. तो अभी आपने सूट लास्ट अगर 3 साल से नहीं पहना है, तो उस दिन पहनेंगे तो आपको खुद को ही अजीब लग रहा होगा, you will not feel comfortable. Or there are things which should be done as a mature individual, as a polished individual, that has to be practiced over a period of time. So what I used to do is, from the next day itself, I used to follow a proper routine, waking up early in the morning, walking for a couple of hours, then having only fruits in the breakfast, then having very light food in the afternoon and in the evening. I don't know whether I should be quoting this or not, but there were my batchmates only who used to tell me after a month of mains कि यार तुम अचानक ग्लो क्यों करने लग गए. So obviously you don't need to put any cream to glow yourself up, but the point I want to mention is, you need to really look very polished, because there is only benefit attached to it. I'm not telling that on the basis of your looks they are going to give you marks, but what's bad in looking good? Obviously it is going to add only brownie points, it will not subtract your marks, right? So जो भी best हो सकता है वो करना चाहिए मेरे हिसाब से. So I used to follow a proper routine, having very healthy food, and then next, following a proper lifestyle as such. एक second, I have to take a call. Sorry, a call from a senior. So where was I? Yeah. So following a proper lifestyle. So I will tell you just an example. I used to wear proper trousers and shirts and ties even on normal days. And whenever people used to ask me कि यार आज क्यों पहने हो, तो मैं बोल देता था मेरा मॉक है, जबकि रहता वैसा नहीं था. I was just getting used to good clothing, good lifestyle, and good food. Plus, company is very important in these days. Trust me, your good company in interview time is going to give you so much of benefit that I cannot tell you. These are the things which are not objective in nature, but trust me, it is very good for you. ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है जो ऐसी बातें करते आ रहे, इंटरव्यू में तो जो होना है उसी दिन होना है. इंटरव्यू कभी प्लान थोड़ी होता है. पर्सनालिटी टेस्ट तो ऐसा ही है, वो तो बहुत अच्छे थे भैया, देखो उसको कम आ गया, वो तो बहुत खराब था उसको बहुत ज्यादा आ गया. ये सब प्लीज डू नॉट बाय दीज थिंग्स. ट्रस्ट मी, you must have good company in these 2-3 months, very positive people, very hardworking people, and who have good opinions to talk about the system, about the issues related to the society. अब ऐसे लोगों से कि हाँ हाँ आंसर में तो ये बोलना है, लेकिन यार देखो होना तो है कुछ नहीं, सब लोग तो चोर ही हैं,
अरे पॉलिटिक्स में तो कुछ होता नहीं। ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहिए कि आंसर कुछ बोलना है और एक्चुअल में कुछ और है। ट्रस्ट में, आप जैसा सोचेंगे, जैसा लोगों से सुनेंगे, आपके मन में भी वैसी ही बातें आएंगी। Try to surround yourself with very positive people who have really suggestion based opinions on even the burning issues of the country. Plus, a lot of practice is required. I used to practice a lot, seeing my laptop, switching on the video mode, or reflecting on my own answers. You all must be, जिसने इंटरव्यू दे रखा होगा, जिसने मॉक दे रखा होगा, they must be able to connect what I'm going to tell you. It's just after the mock or just after the main interview, after coming out of the board, for next 2-3 months, or for some people for next 6 months, you would be thinking, अरे इसका तो मुझे वो बोलना चाहिए था, I should have said this when they asked me this, I should have told this when they asked me this. ये सभी के साथ होता है और ये कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. When you practice, the best part about it is when you practice, whatever you feel best after coming out of the mock, or after coming out of the practice with your friends, or after 3-4 iterations with yourself, with your own reflection, whatever best answer you think you should have given, which you were not able to give on the spot, write it down. Till the last day of interview, you should keep polishing your answers, keep refreshing your answers, and trust me, you will come up with flying colors on the D-Day. You know, the kind of answers I gave, you can Google it up. कुछ interviews में मैंने बोल रखे हैं, अभी answers मैं बताऊंगा. It was although very flowery, but they were interesting enough to make them smile, to make them get convinced about my intentions about this service. And with grace of Almighty, I have been following those principles till date. नेक्स्ट जो अभी लास्ट पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ये whatever I have talked till now has all been subjective in nature and cannot be, it can never be said if you do this then this will happen. You know, this is not science, whatever I have talked till now. Now let's talk about something that is science, that you must do these objective things to get you up there. Point number 1 is make a huge question bank. So I have a copy, I still have that copy. So there were 2 thick copies I had, in which I had more than 1,000 questions and answers about myself. मतलब मैंने numbering करके नहीं रखा है उसको, but still I tell you, there were so many questions and answers I had already prepared about myself, about my career, about my hobby, about whatever possibilities is there, so that whatever they are going to ask, I have something prepared for it. जिस भी mock में जिसने भी जो भी पूछा, I had jotted them down. Because, you know, there are times it is so subjective in nature that if you answer X, they will go to Y. It's like a chess, you know, it's a discussion. So if you give answer to question A as B, they will pick up questions from B. If you answer B as C, they will pick up questions from C. There's a chain of and flowchart of answers bana ke I had thick copies of answers. And obviously you look over prepared sometimes. मैं उसका भी example दूंगा. जैसे in my first board in 2014, when they asked me what are the 3 problems of Jharkhand, can you name only 3 problems of Jharkhand? And since I have prepared it so well, I said, sir, inequality, instability and insurgency. So triple I मैंने cram करके रखा हुआ था. ये थोड़ा सा awkward हो जाता है, उतना मैं mature नहीं था कि मैं थोड़ा नाटक करके उसको आंसर करता. But point ये है कि when they saw कि he is highly prepared about this answer, they didn't ask me further. Unlike if you would have said, sir, this is, I think the 3 problems would be, 1, I think Naxal insurgency, the other would be high levels of inequality in the society, and the third, I think the political instability which is there in Jharkhand for last 20 years. ऐसा अगर मैं कुछ बोलता, they might have gone ahead with asking, you know, why there is Naxal insurgency, what are the solutions you suggest, ऐसा कुछ पूछते. But when they saw that I'm highly prepared, what they did is they jumped. The next question was, what are the problems of RTI? So the point I want to make is, prepare really, really well. All the answers you can think of, all the questions you can think of, same question ke multiple answers you can think of, jot them down. And on the day of your main interview, when they ask, pretend that you are actually thinking and then answering.
so that they get a feel of your answer. Yes, he is actually getting submerged in the question and then thinking and then giving answers. Then they will further move to the subsequent questions towards to your answers. Last, बस इतना है कि this is a phase in which the interview board has been asking questions to so many people for so many days, so they also get bored for last 1 month 2 month. आपका first day तो नहीं होगा, किसी का होगा तो ठीक है, but point ये है कि ये उनका प्रोफेशन बन गया. फर्स्ट डे भी होगा तो जो बोर्ड है वो क्या पता, they might be interviewing people from CDS, NDA, something like that. I don't know much, but the point is कि उनका काम ही ये हो गया. So for them it is a very repetitive activity. So for you it's once in a lifetime activity, and for them it is their life. So it doesn't matter to them whether you perform good or bad, but it matters a lot to you. So what I want to say is, on the day of your interview, try to guide the interview towards your strengths. If you are able to do it, nothing like it. And plus, the board is generally trying to ask questions which they have not been asking in the last many interviews. So what they do is, whatever is going on in and around, they try to ask things from there, connecting with your DAF. Like, for example, since I was a computer science engineer, they asked me about a bug, about a virus, which was there in the news, but it was there only in Times of India. अभी कोई नया वायरस आएगा तो उसका न्यूज शायद ही हिंदू में आएगा, बट वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें कवर हो जाता है. तो मैं ये पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि थ्रू योर डैश try to derive things which is going on in and around you, especially not only from Hindu. अभी मैं या आप तो अभी तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट बी रीडिंग इट. अभी मुझे तो काफी टाइम हो गया तो आई एम नॉट रीडिंग हिंदू मच. मैं लेता जरूर हूँ अभी भी, बट उतने ध्यान से अब नहीं पढ़ते हैं. इन टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं. तो पॉइंट ये है कि वो लोग भी अभी जो करंट न्यूज में जो पढ़ना होगा, दे मस्ट बी फोकसिंग ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया और सच न्यूज पोर्टल्स लाइक इन शॉर्ट्स, डेली हंट, ये सब वो लोग ज्यादा देखते हैं rather than हिंदू का लाइन बाय लाइन पढ़ना. तो आप भी ये सब चीजें फॉलो कर लो. ऐसे सारे एप्स जो उनके मोबाइल में हो सकते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, वो सारे आपके मोबाइल में हो. ऐसे सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जिसका प्रचलन ज्यादा है, जिसका सेल ज्यादा है, जो वो ज्यादा पढ़ते हो, वो सब आप पढ़ रहे हो, ताकि ऐसी कोई चीज ना छूट जाए. क्योंकि ऑब्वियसली इन शॉर्ट्स में तो फालतू चीजें भी रहती है, अच्छी चीजें भी रहती है. नेपिली भी काफी अच्छा है. तो ऐसी चीजें जो उनके मोबाइल फोन में होगी, डेली हंट भी अच्छा है, वो सब आपके मोबाइल में होनी चाहिए. सो दैट इवन अ स्मॉल न्यूज that might be related to your DAF, वो उनको अगर उस दिन क्लिक कर गया, they ask and you are not able to answer it, कि सर मैंने तो सुना ही नहीं है ऐसा कोई नया वायरस आया है, then they will be like कि तुम्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हारे ओन सब्जेक्ट में, तुम सिविल सर्विसेज में क्या इंटरेस्ट लोगे. तो वो जरूर करना. टाइम फॉर एनी टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस वन, एंड टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. पहले कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कुछ सुनना मुझसे, तो यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज एक और टॉपिक रह गया है. डैप से मैक्सिमम क्वेश्चंस डिराइव होती है, वो ध्यान देने वाली बात है. कई बार डैप से क्वेश्चन, जैसे मुझसे पूछा गया था कि आंध्र बेते के बारे में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था. तो व्हाई डिड दे आस्क मी? बिकॉज माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी and I had worked in Bangalore, so they connected it like Mysore. Andhra Bete was in MN Srinivas was researching in Mysore. So he actually told me, okay, Oracle, Bangalore, Mysore, sociology, tell me about MN Srinivas. So this question was asked by David P. Simla sir. So the point I want to make here is, अपने DAF में ऐसे connections ढूंढिए, उससे questions derive करिए. If you have percentage of marks mentioned in your DAF, if it is falling down in class 10th से 12th से graduation से post graduation, there can be a question why your percentage of marks is falling since your board exams. तो इस टाइप का derivations कर लेना अपने DAF में, ठीक है. Now topics you want me to cover or questions you want to ask, we'll move out to question answer round. Anyone? No. Is Bandgala recommended for
people already in service. No, do not want to create a distinction. अभी क्या है ना, देखो अभी दोबारा एग्जाम दे रहे हो तो they want you to be very humble कि यार ये अभी भी बेकार है, ये अभी भी desperate है, अभी शो ऑफ करने का टाइम नहीं है. जिसने भी ये पूछा है, आई होप ही इज देयर. अभिषेक इज देयर? अभिषेक? Yes, sir, I'm here. हाँ हाँ हाँ. तो अभिषेक मैं यही बोल रहा था कि दे वांट टू सी, अभी क्या है ना, वो लोग बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे डोंट वांट टू सी एरोगेंट पीपल और शो ऑफ पीपल. ठीक है, तो अभी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है. अभी आप बनगला पहन के जाएंगे, दे विल डेफिनेटली आस्क, देन यू विल प्राउडली टेल देम सर आई एम ऑलरेडी इन IITS. अच्छा ठीक है, तो उसी में रहो बेटा तुम, है ना. तो द पॉइंट इज कि यू शुड साउंड हम्बल एंड यू शुड साउंड डेस्परेट एनफ. ठीक है, आपकी सर्विस तो डैक में लिखी ही है, वो उससे पूछेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं, अलग से दिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so that because they are Thank you, going to sir. judge you with all other candidates as well, तो वो सभी कैंडिडेट्स को बराबर ट्रीट करने का कोशिश तो करते ही, चाहे हेलो इफेक्ट कैसा भी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, anybody else? गुड इवनिंग सर. सर योगेश. सर पहले सर थैंक यू सर. सर पिछली बार भी मैंने आपसे गाइडेंस ली थी, मेरे 182 का स्कोर आया था सर. आई गॉट डिफेंस एस्टेट सर्विस इस बार. सर फर्स्ट तो सर थैंक यू सो मच. आपने एक एक जो चीज कही थी मैंने नोट डाउन की थी और मैं काफी दिनों तक सूट पहन के आसपास घर में घूमा था सर. सर मुझे एक दिक्कत हो रही थी कि सर मैंने लिंग्विस्टिक्स मेरी हॉबी थी जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, और सर मैंने बहुत तैयारी की थी उस पर, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, एंड सर उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं किस तरह से कॉन्वर्सेशन में इसको डाल सकता हूँ सर. तो मुझे उस पर कुछ एडवाइस चाहिए थी सर. हॉबी में मेंशन्ड है? हाँ जी सर. सर आपने भी बताया था कि आपने भी एक स्क्रिप्ट पे काम किया था, तो मैंने उसी तरीके से एक स्क्रिप्ट के बारे ऊपर काम किया था, मैं कोशिश कर रहा था कि कॉन्वर्सेशन में डाल दूं, बट हुआ नहीं सर. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा नहीं उन्होंने? सर उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा था, मैंने शुरू में बस वही बताया कि मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ, और फिर वो हॉबीज वाले पे आए ही नहीं सर. मतलब मुझे लगा खुद ही, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स सर बाकी हर तो बोर्ड अभी पूछ लेता है. एक तो हाँ हाँ, एक लर्निंग ये है कि अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे इंट्रो में पूछे उसी में पुट कर देना है. जी सर. इंट्रोडक्शन में यू कैन पुट योर हॉबीज डायरेक्टली, है ना. जी सर. और बाकी और एक काम कर सकते हो, आप अपना जो रजिस्टर बनाओगे, ये सभी के लिए है, जो रजिस्टर बनाओगे क्वेश्चन आंसर का, तो मैं क्या करता था कि जैसे मुझे बहुत मन था कि वो मुझसे पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम, है ना, तो हर आंसर जैसे वो पूछ रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वो पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. ठीक है, तो मैं उसमें जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करता था कि मैं अपना नाम घुसाऊं और उनको पूछवाऊं. तो जो तुम पूछना चाहते हो, जैसे अपनी हॉबी पूछवाना चाहते हो, एक तो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा है तुमसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछेंगे, तीसरा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इन सर्विस पूछेंगे. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें अपनी हॉबी को घुसाया जा सकता है ना. तो उन सभी क्वेश्चंस को अलग से लिख के रखो, बिकॉज यू वांट देम टू बी ड्रिवन टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स, योर हॉबी. देन ऑल सच क्वेश्चंस, ऐसे 10 12 15 क्वेश्चंस तुम्हारे पास होने चाहिए जिनमें से एक भी उन्होंने पूछ लिया तो यू विल डायरेक्ट देम टुवर्ड्स इट. वो मैं करता था. मैं 2-3 ऐसे क्वेश्चंस था जिसमें मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश किया, दे एक्चुअली गॉट ड्रिवन बाय माय थॉट प्रोसेस. तो वो कर सकते हो कि एक जगह ऐसे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे प्रयास करके प्रिपरेशन मोड में ही कि मैं क्या बोलूंगा कि वो उधर घुसेंगे. जैसे तुमसे पूछ दिया व्हाट विल यू डू इन सर्विस, सर आई हैव रियली बीन हाईली इंटरेस्टेड इनटू लिंग्विस्टिक्स या फिर राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग एटसेट्रा. सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज lack of I will first of the first I would try to do some literary festivals in my district, so that this part of thing, apart from the core focus on health and education and blah 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 blah, I would try to do this literary festival in my district, so that students also who have such inclinations will be motivated. This, that India being a bilingual country has not been able to produce very good literary novels, I would say, both in Hindi and both in English, both Hindi and English. So I think such motivation among the kids in their own language or in English would make them a good novel writers and all. It's a बकवास कर सकते हो. ठीक है जी सर. Anybody else? और कोई क्वेश्चन? Any more questions? Sir, can beard be kept on the day of? Yes, it can be, but it should be highly trimmed. मतलब ये मेसी नहीं लगना चाहिए.
ठीक है, बट रख सकते हैं। बट मेरा यही है कि हर आदमी का अपना अपना फेस होता है यार, मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ, वो आपका चेहरा देख के पता चलेगा। बट पॉइंट ये है कि अगर आप पे अच्छा लगता है, आप पॉलिश्ड लगते हैं, आप वेल केम्प्ड लगते हैं। देखो मेरा ना हमेशा से ओपिनियन ये रहा है इन द पर्सनालिटी टेस्ट कि मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँगा तो मैं एक फिट, स्मार्ट, हाईली एक्टिव थ्रू हिज फेस, थ्रू हिज वर्ड्स, ऐसे लड़कों को लूँ। क्यों? क्योंकि जो अपना ख्याल रख रहा है वही बाकी लोगों का ख्याल रख सकता है। जो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा है, जो खुद ही 120 किलो का है, he can never keep his district good or his work seriously. तो सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना। तो if you look well trimmed, well kept, highly polished in your beard, obviously you should keep it. और अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि नहीं मेरे पे बियर्ड अच्छा नहीं लगता है और बहुत बड़े बड़े हैं मेरे, या शायद सामने वाले को पॉलिश ना लगूं मैं इसकी वजह से, शेव इट, एक दिन की बात है, ठीक है। ऑल्दो इससे बहुत कुछ होता नहीं है, बहुत जज नहीं करते इन चीजों पर मैं जैसे पहले भी बोल रहा था कि जो भी बेस्ट हो सकता है आपको लुक वाइज वो कर लेना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ योर क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ योर फेस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिसेस। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर, इज इट पॉसिबल टू चेंज आवर फोटो इन डैफ? नो, आई डोंट थिंक सो। मेरे टाइम में तो नहीं था, बट मेरे साथ भी ये हुआ है। मेरा डैफ में जो फोटो था उसमें बाल एकदम खड़े खड़े थे, तो एक दो मॉक में तो उन्होंने पूछा ये क्या फोटो लगा ली है, दिस शोज how not serious you were while filling up your DAF, इतना घटिया दिख रहा है, you look so handsome, ये फोटो इतना गंदा दिख रहा है, ऐसा करके एक दो मॉक में पूछा था। मेन इंटरव्यू में नहीं पूछा, तो मैं भी बहुत वरीड था उस फोटो को लेके, पर मैंने आंसर कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लिया था उसका, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट मैंने जानबूझ के उसके 2-3 आंसर प्रिपेयर कर लिए थे कि अगर उन्होंने पूछा कि ये बाल इतने अनकेम्प्ड क्यों है, मैंने एक आंसर रखा था कि सर हमारे यहाँ डेथ होने के बाद 2 महीने बाद तक बाल नहीं कटाते हैं, तो सर रिसेंटली डेथ हुआ था। अब वो पढ़ता रहे वो कौन सा कल्चर से मैं बिलोंग करता हूँ, कहाँ करता हूँ, ये सब कुछ, या दूसरा और कोई आंसर मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो इस टाइप का प्रिपरेशन कर सकते हो अगर डैफ में फोटो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन यू आर नॉट सीरियस एनफ टू फील द बेस्ट ऑफ योर फोटोग्राफ्स इन योर डैफ, हाउ सीरियस यू आर फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा था किसी मॉक में। हाँ, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? हाय सर, माय नेम इज गरिमा। तो मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। मेरा बर्थ प्लेस बिहार है सर, बट आई हैव लिव्ड इन हैदराबाद ऑल माय लाइफ। तो मुझे पूछना था सर कि अदर देन द फैक्चुअल स्टेट इंफॉर्मेशन बिहार के बारे में जो मैं प्रिपेयर करूंगी, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स सर, कितने डेप्थ में जाना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस? Garima, I would say the basic data of your state, it should be on the tip of your tongue. Like I'll just quote the example of my own. When I was giving interview for the second time in my 2015 board, then they asked me very subjective questions. Like they asked me, what is the problem of child labor? I gave a very flowery answer. Then they asked me, what is the problem of dowry system? I again gave a very flowery answer. And after listening to these fancy answers, one of the board members might have guessed कि ये बस हवा में बातें कर रहा है. So what he did is he started throwing 10 to 12 questions he threw at me only based on facts of Jharkhand. He said, what is the literacy rate of Jharkhand? I answered. What is the population of Jharkhand? I answered. How many districts are there in Jharkhand? I answered. What is the ratio of what is the population percentage of tribals in Jharkhand? I answered. तो मैं ये पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको बिहार का करंट अफेयर्स अगर नहीं पता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, पर अगर बेसिक फैक्ट्स नहीं पता होगा, पॉपुलेशन रेशियो, लिटरेसी रेट, फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल परसेंटेज इन पुलिस, व्हाई इट इज सेकंड हाईएस्ट, हाउ इट इज देयर, ऐसे बहुत ही बर्निंग, बहुत ही अच्छी चीजें अगर आपको नहीं पता होगी तो इट विल बी इन अ वेरी बैड लाइट। तो एक तो है कि जो बेसिक डेटा है, एरिया ऑफ बिहार, नंबर ऑफ रिवर्स इन बिहार, ये जो बेसिक डेटा है वो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए ऑन द टिप ऑफ योर टंग। एंड अदर देन दैट कुछ करंट अफेयर्स पता हो तो ठीक है, नहीं भी पता होगा तो चलेगा। बट द बेस्ट पार्ट what happened with me was whichever 10 questions he asked me, that one guy, I was able to answer it. एंड जस्ट जैसे मैं अभी सेशन में बोल रहा था, ये फैक्ट जैसे ही उनको समझ आ गया कि इस बच्चे को रटा हुआ है, तो उन्होंने फिर एक भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा। लास्ट क्वेश्चन मुझसे उसी आदमी ने पूछा
कि डू यू थिंक जुडिशियल अपॉइंटमेंट JSE इज राइट और रॉन्ग, कोलेजियम सिस्टम इज सो बैड, दिस दैट करके। फिर मैंने जब उसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया तो उसके बाद ही वाज अबाउट टू आस्क अनदर क्वेश्चन, बट मैम ओनली सेड कि नहीं अब मत पूछिए इसको, यू कैन गो नाउ। तो पॉइंट मेरा बस इतना है कि आपको सारे फैक्ट्स वाले आंसर्स एकदम टिप ऑफ द टंग में होने चाहिए। कुछ करंट अफेयर्स डेफिनेटली पता होना चाहिए जो एकदम ही बर्निंग और एकदम ही डिस्टिंक्ट है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में टेस्ट ही यही होता है कि आप अपने आसपास से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना अवेयर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Sir, how many questions and in how much depth can we expect based on the service that we are allocated and have joined training? The interview may be about 3 to 4 months into the training. Okay. So what service are you in, Sanchit? Sir, I am in IAS IT. अच्छा, मैं भी उसी में था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, what I did मैं बता देता हूँ, वो आप भी कर सकते हो। पहाड़गंज में एक ऑफिस है IAS का बहुत बड़ा, ये सभी के लिए जो भी जिस भी सर्विस में है। मैंने ट्रेनिंग नहीं करी थी, मैं UL लेके आ गया था क्योंकि मुझे था कि मैं रिजाइन करूंगा। आई ओनली वांटेड IAS और आई वुड हैव सर्व्ड इन NGOs और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा एकदम क्लियर चॉइस था, तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर भी मैं प्रिपरेशन से के लिए मैं चला गया। वहां पे एक महाराष्ट्र के एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, ही वाज जॉइंट कमिश्नर दैट टाइम। मैं उनसे मिला। उसके बाद लगातार 2-3 दिन तक मैं उनके और उनके जूनियर एक डिप्टी कमिश्नर थे 2011 बैच के, उनके साथ 2-3 दिन तक मैं बैठा रहा। दिन भर में वो जो भी कर रहे थे मैं ऑब्जर्व कर रहा था और जो भी पूछ पा रहा था मैं पूछ रहा था। बाकी कुछ टैक्स रिलेटेड एक्ट्स, अमेंडमेंट्स, लास्ट ईयर जो चेंजेस हुए वो सब पढ़ रखा था। तो पॉइंट बस 2 हैं। एक, आप जिस भी सर्विस में उसके सीनियर के ऑफिस में जाके एक आध दिन बैठिए, नहीं तो कम से कम उससे 2-4-10 घंटे बात करिए। IRTS से तो पूछिए उसे रेलवे ट्रैफिक क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, कैसे काम करता है। IRS IT है तो देखिए फाइल्स कैसे मूव होती है, एरिया कैसे डिवाइड होता है, कमिश्नरी किसको बोलते हैं, कमिश्नरी के डिविजन्स किस आधार पर होते हैं, एरिया के आधार पर होते हैं, पॉपुलेशन या रेवेन्यू। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन से जो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, वो अगर नहीं आ रहे होंगे तो अगेन यू विल बी इन अ वेरी बैड लाइट कि यार इसको मतलब ही नहीं है, जो मिला है उससे उसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो उसको नई चीज देके क्या हो। Next question is where you asked questions on your service. No, I was not asked any question related to my service, but I know many of my friends because 14-15 में out of 180 30 लोग के आसपास थे जो IRS IT से सीधा IAS बने थे। तो वो सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कम से कम 50% लोगों से तो डेफिनेटली उन्होंने पूछा ही था। तो they will ask you, you cannot avoid it. Thank you, sir. Thank you very much. Shubham Agrawal, sir, I have written CSM in English medium, but filled Hindi as a medium for interview. Is there any negative effect on it on marks? No, definitely not. ये देखो हमेशा ना ये एक जनरल वो है, सभी को मैं बोलना चाहूंगा, ये किसी भी चीज को देखने का हमेशा नजरिया होता है। ट्राई टू चेंज योर नजर, थिंग्स विल चेंज। अभी आप इसको वीकनेस की तरह देख रहे होगे, कमी की तरह देख रहे होगे, तो आपको कमी ही दिख रही होगी। अभी आप इसको स्ट्रेंथ की तरह देखो कि मुझे दोनों लैंग्वेज में उतना ही कंफर्टेबल हूँ। तो अभी सामने वाला अगर कुछ पूछता भी है कि why you failed in English, and sir, I was totally comfortable in both the languages. I just thought of practicing them both. मस्त है, खत्म हो गया। तो वो थोड़ा सा ना वो शो करना है कि आपको ऐसा कोई इश्यू नहीं है और आप इसके लिए लो नहीं फील कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। You are perfectly fine. You wanted to give interview in Hindi. I just wanted to practice my mother tongue, or just wanted to जैसे अगर पूछा कि CSM इंग्लिश में क्यों भरा, तो सर सब कुछ इंग्लिश में ही है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, फॉर्म ऑफ इंग्लिश में भरे थे, तो हिंदी में क्यों ये भर दिया? सर पर्सनालिटी टेस्ट I believe is to talk from the core of your heart, and my heart speaks only in my mother tongue. कितना अच्छा लगेगा सुनने में, इस टाइप की बात कर सकते हो। I tell this sugar coating of your answers. ठीक है शुभम? Yes, satisfied? thank you. Sir, I am from Bihar and I did my schooling till 10th and graduation from UP. Okay, schooling till 10th Bihar, and schooling till 10th and graduation from UP. Should I prepare the current affairs of both the states? हाँ हाँ, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स स्टेट का पर से उतना तो नहीं पूछते, जो मैं पिछले गरिमा को भी आंसर कर रहा था। ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए।
खासकर जो एकदम ही डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ द स्टेट ऑफ लेट जो हो रहे, दोनों स्टेट का प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देखो यार, एक बात समझो है ना, हिमांशु एंड ऑल अदर्स, मैं हमेशा सेशंस में बोलता हूँ कि सामने जो 5 लोग बैठे हैं ना, वो 300 साल लेके आए हैं, 60-60 साल से ऊपर ही सबकी उम्र है। वो 300 साल में कहाँ कहाँ रह के आए होंगे, आप तो बस 30 के हो, मतलब 25 के हो, 24 के हो, तो यू नेवर नो कि कौन क्या होगा कब। जैसे मुझे याद है कि मेरा वन ऑफ द मेंबर्स आस्क्ड मी चास नाला इंसिडेंट क्या है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बोकारो की एक छोटे से जगह से जिसका नाम चास है, मेरे डैफ में लिखा है। वो मुझे पता था तो मैंने बता दिया। मैंने ये भी बोल दिया कि सर काला पत्थर नाम की एक मूवी बनी थी, अमिताभ बच्चन था उसमें, धर्मेंद्र था सर, उसी पे बनी थी। वो बहुत खुश हो गया। लेटर ऑन ही टोल्ड मी that I was board member in the committee which went on to inspect the Chas Nala incident. There were members from erstwhile USSR to submersible pumps were not available in India. We brought it from USSR. तो आप समझ रहे हैं, उस समय वो शायद IAS होगा, उसमें वो कमिटी का मेंबर होगा। एक और मेंबर ने मुझसे पूछा था कि आपके डेट ऑफ बर्थ के दिन क्या हुआ था, तो मैं रट के गया था। मैं बोला सर ये हुआ था, वो हुआ था। नहीं नहीं और बताओ, आर्मी रिलेटेड कुछ याद है? हमने हाँ सर, श्रीलंका में फूट रखा था हमने पहली बार। वो बहुत खुश हो गया, बोला कि आई वाज पोस्टेड इन डिफेंस मिनिस्ट्री दैट टाइम एंड वी वर डूइंग द सेम थिंग, दैट इज व्हाई आई रिमेंबर दिस डेट एंड दिस द सेम डेट ऑफ बर्थ आई हैव एंड सेम ईयर। उसी दिन लैंड हुआ था। अब उसको ये डेट याद थी क्योंकि उसके जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट है वो। तो अभी 5 में से एक बिहारी और एक यूपी का मिल गया ना, दोनों अपने अपने हिसाब से पूछेंगे। तो इसीलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला किस बैकग्राउंड से है, कौन सा प्रोफेसर है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा, क्या पता आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा उसी का वो पीएचडी होगा। यू नेवर नो। आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चंस, आई जस्ट वन थिंग आई मेंशन, है ना, ये मैं भूल जाता हूँ। व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर सर्विस यू आर इन, व्हाटएवर जॉब यू आर डूइंग इन द पास्ट, वन थिंग इज अ गोल्डन रूल, कहीं लिख लेना, नेवर क्रिटिसाइज एनीथिंग दैट यू हैड और हैव। Yes, appreciate what you are going to get through this interview, but never ever be a critic to your past. I'll just quote an example. One of the students answered a question कि मैं बंसल में पढ़ाता था, तो उसने पूछा कि यार तुमने क्यों छोड़ा? बोला कि सर ऐसे ही बंसल बहुत बोरिंग टाइप का हो गया था, पढ़ाते थे, सेम टॉपिक रहता था, रोज रोज वही दिखती थी वही। अब सामने वाला प्रोफेसर था, you know what he said? Okay, you taught for 2 years in Bansal class and you find it boring. I have been teaching for the last 45 years. And I still find every next day of teaching as more interesting than the past. अब उसके दिल को कितना हर्ट हो गया वो उस प्रोफेसर को। इसीलिए कोई भी अपने पास्ट को बुराई मत करना, ठीक है? प्लस हर चीज में अपना हॉबी, अपना हार्ट वाला एंगल कि अपने दिल से आप कर रहे हो, अपना कॉलिंग, ये मेंशन करने का प्रयास करना। अभी जो राजू जी बता रहे थे, 5-6 लड़के कोडरमा आए थे, उनको मैंने 7 दिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया था। कोडरमा में मैंने काफी कुछ किया, यू कैन गूगल इट अप। चाईबासा में भी बहुत कुछ किया था, नेशनल लेवल पे चीजें रेप्लिकेट भी हुई थी। कोविड के टाइम में मैंने एक रोबोट बनाया था, एक फोन बूथ सैंपल कलेक्शन डिवाइस बनाया था। यहाँ भी काफी कुछ ऐसा कर रहे हैं, स्कूल में, हेल्थ में। वो बच्चे जानते हैं, वो 5, अगर अभी कोई जुड़ा होगा तो उससे पूछ सकते हैं। तो पॉइंट मैं ये मैं कर रहा हूँ, वो लोगों ने उनमें से एक ने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरी सैलरी उसमें मेंशन्ड है, मेरी पास्ट सैलरी से नई न्यू सैलरी जो है, मैं पहले पढ़ा रहा था एक जगह, उसमें जो मिलता था उससे एक रुपया कम में मैंने रिलायंस में ज्वाइन किया। तो वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कम में क्यों ज्वाइन किया, कम में क्यों ज्वाइन किया? तो मैं बार बार उनको जस्टिफाई करता हूँ, मैं ये जॉब पसंद थी मुझे स्विच करना था, मैं बहुत बोर हो गया था पढ़ा पढ़ा के, कुछ कुछ बोल रहा था। मैंने उसको एक आंसर दिया था, वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे अगर आपका पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप इसी तरह का आंसर देना। सर आई लव टीचिंग, बट सिंस आई वाज अ ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वाज मिसिंग माय मैकेनिकल डेज and my heart somewhere was talking about was giving me a calling to do something of my graduation subject. And sir, when I had to choose between a rupee 1 and my heart, I chose heart. Yeah, rupee 1 and my calling, I chose calling. तो अभी क्या है ना, आप जो पढ़ा रहे हैं वो की भी तारीफ कर दिया और इधर भी बोल दिया कि यार ये भी मजेदार था, ऐसा
तो ऐसा ही प्रयास करना। I have got IDAS in 2021 attempt. I haven't joined training and will be going for UL. Will it give a negative? No, why would it be? मेरा भी UL था, ऐसा कुछ नहीं है. Don't think these things. जो तुम सोच रहे होगे वो वही impact लेके जाएंगे. You should feel highly confident about what you are doing. Should have a proper reasoning towards it. If the reason is very bad in terms of perception, जैसे IPS IAS में क्यों जाना है? नहीं सर, आराम बहुत रहेगा, IPS में बहुत किचकिच है. अगर ये आंसर है तो इसको सुगर कोट करके बोलना है. आंसर कुछ जेन्युइन है तो एज इट इज बोलना है, पर आंसर चेंज नहीं करना है. नहीं है, फंस जाते हो कभी भी इन चीजों में, जैसे सर्विस में फंस जाते हैं कि ये सर्विस क्यों चुन के वो क्यों छोड़ा, वो चुन के क्यों छोड़ा, क्या यूएल क्यों ले लिया, IDS में क्या खराबी है. तो आपका जो आंसर है वो दीजिए. और अगर स्टक हो जाते तो एक जेनरिक आंसर जो मैं बता देता हूँ वो ये है कि सर, yes, or I was about to join it, but the very fact that I was allowed to take UL, I thought let's try it once. No such option. I was just loving the thing that I did get in my last attempt. दिया ना यूएल का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ने दिया, या उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने दिया. नहीं देते अगर उनको मन नहीं होता तो, और नहीं देते तो चॉइस भी नहीं आती. ठीक है, अब चॉइस दे रहे हैं तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा ना, उसका जवाब भी देना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. सर, आई एम फ्रॉम झारखंड, कैन यू प्लीज एडवाइस व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू स्ट्रेंथन पंचायत. वॉलीबॉल लगा दो. स्ट्रेंथन पंचायत के लिए तो बहुत सारा चीज है यार, मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा. एक झारखंड बिहार का अलग से क्लास होगा, वो अटेंड कर लेना रोहित. पर पूरे फॉर द होल कंट्री, फॉर द होल ऑल द स्टूडेंट्स, आई विल टेल देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट शुड बी डन इन ऑल द पंचायत्स. वन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत्स. टू, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियल ग्राम सभा. थ्री, implementation of PISA in areas which is scheduled in nature. Four, resizing and restructuring. साइन कर दिए. Resizing and restructuring of थोड़ी देर में resizing and restructuring of पंचायत in terms of size and area. बहुत पर rationalization बहुत सालों से नहीं हुआ रहता है, वो करने की जरूरत है. And devolving of funds more to the lower levels. Like today, if it is into the panchayat, it should go to the wards. If it is in the wards, it should go to the gram sabhas. ऐसा करके डिवोल्यूशन और 4 layers 5 layers में कर सकते हैं. ये आंसर हो सकता है. और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस, अभी इतना ही ध्यान आ रहा है. यस सर, आई वाज आल्सो थिंकिंग अलोंग द सेम लाइंस. थैंक यू. कौन है ये? प्रेक्षा. ठीक है, गुड गुड. एनी अदर क्वेश्चन, और आई शुड, और द सेशन इज ओवर. लास्ट बात इतना ही है. सम पीपल हैव लेफ्ट आल्सो. मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ. ठीक है, बोलता भी हूँ. गुड. तो मैं बस एक चीज बोलता हूँ यार हर बार. ये 5 बच्चे भी आके गए थे, अभी लास्ट मंथ ही आए थे, जिन्होंने मेंस लिख रखा है और खाली बैठे थे, तो मैंने बोला आके देख लो. बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर्स, बेस्ट टू गेट वट एवर सर्विस यू want to make through towards the end of this session is grace of the Almighty that you will be able to get the service of your choice. Way better than you and are not into the service or not have qualified for the interviews. Whatever service you get, whatever work you get to do, honesty, integrity, need good people in this service. Anybody, but the point is 180 के 180 हर साल आते हैं. Do you able to
है तो एक बार कोशिश जरूर करना यार। और तो पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ लेना, नंबर राजू जी के पास है, उनको दे देना, उनसे ले लेना, ठीक है। और कभी कुछ अच्छा देखना हो, वेरी गुड वर्क, तो कर सकता हूँ। Going on in here, we have villages which are like Ralegan Siddhi, we have schools like DPS, we have hospital which is performance after RIMS in Jharkhand, despite Kodama being the smallest district in Jharkhand. We are performing way better than all other districts, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh. And village development सब में we are doing wonders. किसी को देखना हो तो आ सकते हो। बाकी अच्छा काम करना जहां भी जाओ, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, थोड़ा सुगर कोट करने का मुझे आदत है, आई कैन सुगर कोट योर आंसर्स रियली वेल। अगर किसी को डाउट है तो अपना क्वेश्चन अपना आंसर दोनों भेज देना, मैं ट्राई करूंगा, टाइम मिलेगा तो सुगर कोट करके भेज दूँ, ठीक। अगर है तो, या फिर कोई संकल्प से है, शुड आई क्विट?